Network means that suppose your Facebook network, that is actually a social network. That means so many persons they have connected to each and others, and they can communicate to their this using this network. Okay, they can send suppose the some of the messages to your friends. Okay, and then your friends also send this message, or they can share their documents. Okay, so this is a one type of network. Network means actually the it is a network. Actually, it is coming from the concept of the graph theory. So you know that in the graph theory there have the nodes. So if you think about the each of the device or each of the person, suppose in the Facebook, suppose, or the your social network, that is the each of the persons you think about all of the nodes, and their connections between the two nodes is called the edges. Okay, so they have the connected. Okay, so this is the, and after this, so this graph or this is the network, they form the network. So here the your computer network is there. Here the so many computers they have connected to each and others, and they can why they are connected, because they are communication purpose. So communications means how they communicate. Na, just like the human being can communicate by their own languages. Okay, so if I speak the if I speaking English language, and you know a listener person is know the English language, only they can understand. And if I telling the suppose other languages, but you listeners don't know about the concept about your language, this language, but they have the face the problem. So that's why in that case, so they have the regard for the interpreter. So interpreter can interpret Sir, we cannot hear you. I think there is a problem on your side. Communicate is not audible. Hello, You are not audible. hello. Your voice is just cutting up in the middle and it just goes for a long time and then returns again. But I'm using the. Hello. Okay, 1 minute. Wait. I'm reconnected again. Okay, so in our system, so each and every computer to connect it to each and others, and how they can communicate, so they have the problem. So but because the when the that is the end user is the suppose the human being, and they suppose give the some of the response to the your systems, but systems cannot understand. Okay, so that's why the and system, that is the your our computer system can understand only the your one language, that is the your binary systems or binary number. One value means that the positive 5 volt, and it is the your zero in the binary concept is zero. So now, so this is the analog, actually the analog to digital, they can convert it, and then again the digital to analog. So this analog and digital conversion will be happen, and by this they can the two systems or the two devices that they have communicated, and two devices are they are connected to each and others, and so then they can communicate. So in that
regarding this, so actually this network, the communication will be happen. So now in our lab, so suppose that you have two system are connected, so you know that the two systems, in between the two systems, one will be the your act as a server, actually the server and client communications. So in the server and client communications means that the server is always the mastermind, okay, so they can handle the all the clients. So server will be the one, and the all of the client. Sir, again breaking your voice. Hello. Sir, you were not audible. रुको यार अभी सर बोल ही नहीं रहे हैं Hello. Request message from the client. So when it is possible, when the server and pass the and server, and then Sir, can after you establishment of the after establishment, yes. Sir, sir can can you repeat again? We couldn't hear you for the last 2 minutes, 2 or 3 minutes. uh, that is the your client server communication. I am telling about the uh, client server Sir, from communications. the first disturbance is Client, occurrence, sir. yes, bolo. From the first disturbance is occurrence. In the middle, if voice is not audible to मतलब, Which part? Which part you will learner. tell me? Which part? Follow. Which part? Then I can repeat it again. From the at first when you are to begin, then we are listening you. After some time, we are not listening. Okay, Then so say, so that is I am telling about the your computer network. Okay, I am starting from the beginning. Computer between each and others.
Okay, that's like your Facebook. Facebook is your Facebook network. Facebook is a social network. Yes or no? Facebook is your Yes, social yes. network. That means so many friends will be connected to the network. Okay, so if you treat as a the all of the persons, all of the actually the users are the nodes, and if they all are connected means that suppose you are you have the so many friends. Okay, so now your nodes. Suppose if I treat as a graph, the nodes will be connected to the your friend all of the friend nodes. Okay, so now so this connection that this edges is the your connections. That means that you connected with your friend one, you connected your friend two, you connected with the friend three. Okay, so now this way the and your friend also connected to each another. Okay, so now in this way the will be the that will be the graph or the this is the network. Now in a computer network system is the computer all of the computer to the connected to each another. Okay, now why the this network is required? Why network is required? Because the your communications purpose, because communication purpose in the Facebook network or social network, you have communicate to your friends. Yes or no? The via the your message passings or the your sharing the images, you have communicate to your friends. Okay, and it should be the some of the cases should be local, it should be global. Okay, now you have to send the post. Okay, so this is the communications, and the communication is the main, there is a purpose. The network is required for the communication purpose is required, and then each and every computer or the system will be connected to each another. Not only the your computer, that will be the your any of the electronic device nowadays, that is the IoT. Okay, or the different type of the your devices, they have to connect it to your network, and then they can communicate it. That is your camera also. Okay, so different type of devices, actually dependent devices, they are connected, and then they can send the data or the send the your informations or send the your messages. Okay, they can pass. So this is the communications. Now the computer systems, how the computer system will be, they can communicate in the computer systems. Will be the computer doesn't know the your any of the languages, they can understand only the binary number or binary systems. That means that your signal. Okay, that means that your like the electronic device means that your audio signal. Okay, so now they can send the audio audio message, and then they have to they convert to your digital format. That is your binary numbers, 0 or 1. 0 means that you know that the 0 is the your Sir, you are not audible. server means that who is the mastermind. Okay, that is a who can take the so many responsibility to that is this communications. Okay, so that is the your client would be the suppose the end users, and they can connect to the your server, and then the server and the client, they can communicate. So before the establishment, so when it is possible now, when the client connected to the server, so this connection is establishment is the first part of the your is that the connection between the your client and server. So client will be connected to the your server. After establishment of the connections between them, then only the client send the request to the server.
सर नहीं है यार। बहुत अच्छा बात बोल रहे हो। Hello. Sir, we can't hear you properly. सर वाईफाई लगा लीजिए सर। Your in your machines have to install by this week. Okay, so you have to install the your
that is your Linux or your Linux, जो भी Linux हो, okay, you can use any of the Linux systems, and you have to install the GCC compiler, okay. Sir, can you please repeat? Your voice was breaking. Should you install You entire you Linux install operating system? you have to install, if it is have your machine, that is you install the Linux is required, okay, in this lab. Linux systems, you have Linux. Okay. Okay, so if it is not, so you have to install the Linux part and GCC compiler. So that is your actually the Actually, the Sir, again your voice is breaking. You are not audible actually. I will be explain one by one. I give the assignment, and so I can use my laptop also. Okay, then I have to share it, and then I can see you. तुम लोग को पास ये है, लिनक्स है तो? No, हेलो, No, sir. Currently we are लिनक्स not on जिसका Linux. We are जिसका sir. जिसका जिसका लिनक्स नहीं है, उसको लिनक्स को इंस्टॉल करो एंड जीसीसी कंपाइलर को इंस्टॉल करो, ठीक है। सो वर्चुअल मशीन यूज करके करो, और जो भी करो। স্যার ভার্চুয়াল sir. মেশিন ইউজ করে লিনাক্স ইনস্টল করলে হবে? हाँ वैसे ही तो होता है। না হলে ডুয়াল বুট করে নে না দীপান। তো ভার্চুয়াল মেশিন দিয়ে করতে পারিস, ভার্চুয়াল মেশিন দিয়ে করতে পারিস, ভার্চুয়াল মেশিন দিয়ে ওটাকে ইনস্টল করে রাখতে পারিস, ঠিক আছে। ইনস্টল করে ওটাকে অন করে নিবি, কোনো অসুবিধা নেই, যদি পার্টিশন না করে করা যায়। কারণ হচ্ছে যে এটা জিসিসি কম্পাইলারটা লাগবে, ঠিক আছে। সো জিসিসি কম্পাইলার নাহলে হবে না। আমি আমার মেশিনে এটাকে করে আমি একটা প্রোগ্রাম করিয়ে দেখিয়ে দেবো, ঠিক আছে, একটা অ্যাসাইনমেন্ট। সো আমি নেক্সট ক্লাসে আমি এটাকে শেয়ার করিয়ে আমি একটা দেখিয়ে দেবো, ওকে, যে কিভাবে এটা রান করাতে হয়, কিভাবে কাজটা করে। তো সেটাকে জিসিসি কিছুই নয়, দুটো টার্মিনালকে ওপেন করতে হবে, কোডিংটা লিখতে হবে, সে কোডিংটা আমি এক্সপ্লেন করে দেবো কিভাবে কি কোনটা কোন পার্টটা কোন প্যাকেজ কিভাবে কাজ করে, কোন কোন ফাংশনটা কিভাবে কাজ করে, পুরোটাই প্রিডিফাইন্ড ফাংশন, প্রিডিফাইন্ড সিস্টেমস, ওকে, অল আর দ্য প্রিডিফাইন্ড। ওকে, সো যেগুলো প্রিডিফাইন আছে সেগুলোকে আমি বলে দেবো কোথা থেকে কোন প্যাকেজ গুলো এসেছে, কোন লাইব্রেরি ফাংশনটা। Sir, again you are not audible. उसके दे दो तुम्हारा सीआर को, है, हम नेक्स्ट क्लास से उसको देख देंगे, ওকে। হ্যালো, স্যার আপনার কথাগুলো পুরো কেটে কেটে কিছু শোনা যায়নি। হ্যাঁ, এটা নেটওয়ার্কের প্রবলেমের জন্য হচ্ছে একটু, আচ্ছা আচ্ছা। বুঝতে পারছি। Isa, hello. Yes sir. So you take the attendance, Okay. and from the next day
স্যার কত কেটে যাচ্ছে? স্যার আবার কেটে গেল কথাগুলো। उपमन्यु क्लास खत्म हो गया। उपमन्यु हाँ का भैया हुआ? कॉल करते थे। हाँ कॉल करेगा ना, ठीक। कॉल करता हूँ हाँ। हाँ क्लास खत्म हो गया राहुल? हाँ सर, लेफ्ट हो ही गया है, खत्म। हाँ लेकिन सर ऐसा बोले होगा तो फेसबुक इज अ कम सोशल नेटवर्क। 10 नंबर का क्वेश्चन याद कर लो। अबे खत्म हो गया ना, पूछना सर से ग्रुप में। हाँ सर, लास्ट में बोले थे अटेंडेंस भेज दो, ईसा को बोले हैं, ईसा अटेंडेंस बनाएगी। स्क्रीनशॉट लिए थे, अगर लिए होगी तो ठीक, नहीं लिए होगी तो भेज देंगे। क्या 51 लोग ज्वाइन थे, 12 लोग एब्सेंट थे क्योंकि एक लोग 2 डिवाइस से कनेक्ट था। चलो अब चलते हैं। अरे बाबा, मुझे तो तुम्हारा ही आवाज नहीं आ रहा है, क्या बोल रहे हो? लिनक्स जानते हो यार, हम 2-4 दिन पहले ही सोचे थे, क्लास शुरू होने से पहले ही, जब मुझे नहीं पता था कि सॉफ्टवेयर है, क्योंकि थोड़ा काम था लिनक्स पे हमको। लेकिन अब मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम एकदम नहीं काम कर रहा है, तो आज उसको विंडो 10 डाउनलोड कर रहा था, लेकिन वो 5 जीबी का फाइल था, वो हो ही नहीं रहा था, इतना लॉन्ग फाइल था। अब उसको आज राहुल विंडो अटेंडेंस इंस्टॉल बना कर। देना। अरे यार भाई, ईसा बना देते, हम बनाते तो क्या ही टेंशन था। मधुमय, तुम तो खुद यूज करते थे ना लिनक्स की, क्या मतलब तेरा तो होगा पहले से। आज हम भी फॉर्मेट ही करेंगे, बहुत क्लास इज ओवर नाउ। कचड़ा भर गया है उसमें। अरे पूरा 2 GB सूदिंग का डलवाई। फाइल है उबंटू वगैरह का, वर्चुअल बॉक्स में कर दो ना इंस्टॉल। अच्छा ये बताओ दीपक, वर्चुअल बॉक्स से यूज करेंगे तो मेरा तो यार सिंपल सा 8.1 ही सपोर्ट नहीं कर रहा है विंडो, तो ये एक साथ 2 ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट कर लेगा ना? रोएगा नहीं ना हैंग करेगा, लैपटॉप? हैंग करेगा बहुत ज्यादा। अरे यार हैंग भी करेगा। एक तो मेरे लैपटॉप में एसएसडी नहीं, पुराना लैपटॉप है, 5-6 साल बुजुर्गों के जमाने का। हाँ वही ना, पुराने लैपटॉप में तो बहुत दिक्कत भाई देगा, एक 2-2 चीज कर ऑपरेटिंग सिस्टम। सकते हो, हाँ बताओ यूएसबी भाई। को बूटेबल बना सकते हो, यूएसबी से ऑपरेटिंग सिस्टम को मतलब यूज कर सकते हो। यूएसबी से? हाँ यूएसबी से, मतलब एक अलग से एसएसडी और यूएसबी कुछ लगा लेना,
उस पे लिनक्स इंस्टॉल कर लेना, यूएसबी भी कर सकते हो, एसएसडी भी कर सकते हो, एंड उससे बूट कर लेना सिस्टम को। समझ तो नहीं है, लेकिन सुनने में बहुत अच्छा लगा। तुमसे हम बाद में कॉल करके पूछते हैं। हाँ, मैं पहले करता था, काली लिनक्स जब यूज करता था तब करता था। एक पेन ड्राइव में लिनक्स इंस्टॉल कर लिया था एंड हाँ। उस पेन ड्राइव से ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करके बूट करता था। अच्छा, तब तो सही आइडिया दे रहे हो। मतलब हमको लिनक्स सिस्टम में इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ पेन ड्राइव में ही रहने पे। पेन ड्राइव में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल रहेगा, उसको ही एक्सेस करेगा, उससे ही काम होगा। अरे अरे, तो अच्छा आइडिया है। वर्चुअल बॉक्स भी नहीं करना पड़ेगा। हाँ, नहीं तो वर्चुअल बॉक्स करने से बहुत स्लो हो जाता है सिस्टम। हाँ हाँ, स्लो थोड़ी, हाँ स्लो हो जाए तो कोई काम ही नहीं रहेगा। ठीक है, इसको हाँ, डिटेल ये में थोड़ा कर पूछ सकते हो। कर। अगर कोई हाई स्पीड, मतलब तुम्हारा अगर 3.0 पोर्ट हो तो बहुत बढ़िया होगा, बहुत मतलब ठीक ठाक ही चलेगा। 3.04 मतलब क्या? मतलब एक होता है ना यूएसबी 2.0 और एक जनरेशन की बात कर रहे हैं। अच्छा हाँ हाँ, अच्छा। जनरेशन में अगर फास्ट वाला पोर्ट हो तो तब तो बहुत अच्छा चलेगा, और अगर स्लो वाला पोर्ट हो तो थोड़ा लैग करेगा, बट तब भी मतलब ओवरऑल सिस्टम स्लो नहीं होगा, अच्छा क्योंकि अच्छा अच्छा। बाद में तुम विंडोज इंस्टॉल यूज करोगे तब भी स्लो हो जाएगा अगर वर्चुअल